that you can really not have complete balance in life. It's impossible. When you want to achieve something, you're going to miss out on something. मैं हमेशा कहता हूँ कुछ लोग अपनों के लिए सपनों से दूर रहते हैं और कुछ लोग सपनों के लिए अपनों से दूर रहते हैं। वो दोनों मिल पाना कुछ लोगों के लिए संभव होता है, 99% लोगों के लिए वो नहीं हो पाता। तो अपनों के साथ रहने जाते हैं तो कई बार सपनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बैलेंसिंग इज बीइंग अवेयर दैट दिस इज माय प्रायोरिटी एट द मोमेंट। आप यहाँ जो बैठे हैं और इस माध्यम से जो भी सुनने वाला है, प्रेशर और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आज दुनिया में। स्ट्रेस इज कमिंग फ्रॉम द प्रेशर टू प्रूव, साबित करना है कि मैं काबिल हूँ, साबित करना है कि मैं वर्दी हूँ। काम प्रेशर नहीं देता है जी, स्ट्रेस तो होना ही है, कुछ भी कीजिए स्ट्रेस होना है, लेकिन पॉजिटिव स्ट्रेस हमको ग्रो करने में मदद करता है। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इम्प्रूव करने की जरूरत है। The biggest myths that the world has ever promoted is balance. And I wanted to bust that myth that you can really not have complete balance in life. It's impossible. When you want to achieve something, you're going to miss out on something. Everything that you choose to make a priority comes along with the collateral damage. And the issue with most all of us in the world today is when we prioritize one thing and there's a collateral damage, we live in guilt that we are missing out on that part. And it's guilt that is jeopardizing the experience of happiness, peace, joy, connection. And if there's one thing I would like to say, we have to stop living in guilt for something that we are missing out on because of prioritizing something. मैं हमेशा कहता हूँ कुछ लोग अपनों के लिए सपनों से दूर रहते हैं और कुछ लोग सपनों के लिए अपनों से दूर रहते हैं। वो दोनों मिल पाना कुछ लोगों के लिए संभव होता है, 99% लोगों के लिए वो नहीं हो पाता। तो सपने पूरे करने जाएंगे तो कोलैटरल डैमेज है, अपने साथ नहीं होते। अपनों के साथ रहने जाते हैं तो कई बार सपनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसलिए मैं इस मंच से ये कहना चाहूंगा, I'd like to say this, just one thing really, balance is not about paying attention to everything equally. Balancing is being aware that this is my priority at the moment, which automatically means some of the things will be at the back seat. Balance means to not live in guilt for those things being at the back seat. And balance means those things that are at the back seat should not remain at the back seat forever. Yes, if I'm wanting to achieve something, something will suffer, but if it's suffering forever, then that's a problem. So you can have it all is meant to bring this awareness amongst people and bust these myths that we can have an imperfect life. Perfection is a myth. Balance is a myth. And we are living with all these myths and misconstrued and distorted narratives in the society. So to be able to bring these narratives where people think, and I'm not even saying this is the way, but this is a way to think. At least we start thinking in this direction and probably life gets better. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you very much again. My gratitude to all of you and my respect to all the wonderful service that we do. Journalism is a great thing, and journalism about asking questions fearlessly, which I'm not taking at the moment because I have to rush somewhere, but reporting things for what they are. I need to rush, truly, truly. One question out of the three, you choose one. I don't know who to choose. One, whoever won. हाँ जी, अरे हाँ वो चिल्ला रहे, हमको चिल्ला रहे कि उनको चिल्ला रहे, पता नहीं। हाँ जी, हाँ जी, correct. I was at IIM Ahmedabad yesterday for an event. I was invited to speak at the event, student event at IIM Ahmedabad. And at that event, they asked me about my journey, my engineering journey, and then, of course, my life of being a monk and how both correlate. And they asked me a very important question, which I experienced as a professional as well. And they were asking me about students and professionals going through a lot of performance pressure and stress. आप यहाँ जो बैठे हैं और इस माध्यम से जो भी सुनने वाला है, प्रेशर और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आज दुनिया में। So उन्होंने मुझे पूछा, they asked, how do you deal with that? I said to them, you know what? It's not the work or it's not the study of 12 hours that's causing stress.
स्ट्रेस इज कमिंग फ्रॉम द प्रेशर टू प्रूव. साबित करना है. साबित करना है कि मैं काबिल हूँ, साबित करना है कि मैं वर्दी हूँ, साबित करना है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, साबित करना है कि मैं भी कुछ करके दिखा सकता हूँ. काम प्रेशर नहीं देता है जी. स्ट्रेस तो होना ही है, कुछ भी कीजिए स्ट्रेस होना है. मैं मंक हूँ, ट्रैवल करता हूँ इतना, उसका भी स्ट्रेस है. हर एक चीज का कुछ तो स्ट्रेस आने ही वाला है. लेकिन पॉजिटिव स्ट्रेस हमको ग्रो करने में मदद करता है. उसको ईयू स्ट्रेस, यू स्ट्रेस कहते हैं. और जो नेगेटिव स्ट्रेस है वो प्रूव करने की जो एक ऑब्सेशन है ना. और इसीलिए मैं सबको कहता हूं, दिखाना किसको है जी. दिखाते दिखाते अगर हम मर रहे हैं तो क्या ही मतलब हो गया वो सब दिखा के. rather than wanting to prove, let's improve. Continuously keep being on the journey of improvement. So as a professional at HP, I was also a part of that race and as a part of monkhood. Can I say that I'm out of the race? It'll be haughty to say that. हम कोई बहुत बड़े नहीं होते ये सब बात चीजें बोलने के लिए, लेकिन एक बात जरूर करूंगा कि 30 साल बाद इस जर्नी पे रह के कोशिश तो जरूर है कि इस रेस से बाहर रह रहा हूं. और अभी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इम्प्रूव करने की जरूरत है. ये जो यू कैन हैव इट ऑल लिखा है, ये कोई नंबर्स के लिए या कोई प्रूव करने के लिए या किसी को कन्वर्ट करने के लिए या किसी को कोई सिद्ध करने के लिए नहीं लिखा. बस अपने अनुभव बताएं जिससे खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ. और हो सके अगर कोई पढ़ ले तो उनकी जर्नी में थोड़ी मदद हो जाए इम्प्रूव होने में. तो बस यही इसका उद्देश्य है. Thank you. Now I really need to rush. Thank you so much for the time and sharing your thoughts. Thank you. I really have something waiting. Today, have a wonderful day.